Hi, good evening, everyone. Give me 1 second. Yep. No, screen is visible. Okay. Okay. Hi, very good evening to all of you. Okay. So in the afternoon session, it got interrupted due to some technical issue in the end. Okay. So we are going to continue now, correct? And since afternoon, picture is a bit more clear now. And एक rough idea है which I feel is on the positive side for all the students. ठीक है? Why is it on the positive side? Because the probability of getting into D school or JNU is a little more practical now. ठीक है? And with the title itself, many of you would have thought कि is it really possible कि DSE will have a low cutoff, right? And honestly speaking, the reason or the notion of having a low cutoff is from the fact कि initially we thought कि किस high range में cutoff जा सकता है for D school, but now after seeing all the ranks and the percentiles which all of you have got and which all of you have shared, ठीक है? So based on that, completely based on that, we are of a notion कि हाँ शायद what exactly we were looking at, we were thinking of, that's not the case. कि you have a cutoff, very first cutoff of 245 या 250 plus, ठीक है? So that might not be the case. और अगर हम उस comparison में बात करें कि whether it will be 250 plus or 245 plus, so considering or comparing against it, it will be on a lower side. ठीक है? So that is the outcome from the entire calculator, which all of you must be seeing, right? So now the point is कि is it really possible कि जो DSC का कट ऑफ हो that can at least go as low as at around 225 के आसपास, 220 225 के आसपास. So the answer to that is that yes, it is possible कि कट ऑफ शायद 25 के आसपास रहे, 25 to 30 के रेंज में रहे, rather than shooting up or going around 245 to 250 का रेंज में. ठीक है? Now, exactly, Suhani, based on the marking of the percentile that you guys have received, 235, both the options are open for you. Both DSC and JNU are practically possible. ठीक है? अब अगर if you guys will again keep on sharing your rank with marks, that will help me in highlighting why I'm saying कि जो कट ऑफ होगा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इस बार शायद जो हम अभी इनिशियली थॉट कर रहे थे 245 उससे कम होगा. इट विल बी अराउंड 225 के रेंज में होगा. एंड I'll explain you why that case will be. ठीक है? सो अगर आप अपना मार्क्स और रैंक शेयर करोगे then I'll be able to give you an answer with an example. ठीक है? Because अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं from the marks that I have received. ठीक है? A very simple basic example. Okay? For example, cool. 1 second. I'm not going into uh, category 1, category 2 का scenario. ठीक है? I'm talking in general. Okay. So for example, if I have a score of, let's say, because I have in front of me, okay, so the student would know himself. So if you have a score of
249 249 के आसपास, then you have a rank of 39. ठीक है. So I'm just punching in the numbers in my system as well, so I'm able to explain it to you. ठीक है. Okay. अगर आप में से भी कोई शेयर करेगा, so I'll be able to add that to my list and then confirm it to you. ठीक है. So Aditi says 225. Okay. Aditi, can you confirm your rank as well? अगर आपने निकाला है with that formula that we shared in the afternoon, which was 100 minus the percentile into the number of applicants sitting this year, which was 1818 something. That was the number. ठीक है. So अगर आपने rank निकाला है, so you could just share that. And thank you, Shashwat. Yours is okay. I couldn't get that. Whether it's 225 or 211. So I'm considering 225 even for Shashwat. Okay. Okay. So yours is 211 because you have a percentile of 98.35. 98.35. Do you want me to share the screen? ये वाला. Wait a second. ठीक है. Let me share ये वाला screen. Let me see if it's visible. ठीक है. I'm not jotting down the names. I'm just typing in the score ranks and the percentiles. ठीक है. Okay, 225 पे you have 99.12. And later on, if you guys want, na, I can share this Excel sheet with you. I don't mind in doing that. Okay. Hmm. Okay, cool. ठीक है. Okay, बहुत ज्यादा हो गया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्रमोशन भाई साहब. But their sheer marketing strategy of coming up with such a calculator. So heads off to them, no doubt about that. Okay, so now we'll focus on our Excel sheet. I won't jot down the names. I'll just put in the score, rank, and percentile. And if anyone could again pin the formula that you guys have used to calculate the rank now, so please do that. Thank you, Shashwat. With 225, you have 161 rank. Cool. This will be interesting. अगर कहीं गलती हो तो please let me know. ठीक है. And Shashwat, you said with that 220, 225, you have 161 rank and 98, 99.12%. Cool. Fair enough. Thank you, Shan. Actually, आज आना था साउ का result. Today was the date, official date, 29th of April. But yes, they have changed it as far as we know, and you're also authenticating it. Thanks for that. Yes, Devraj, I guess settled universities might be possible. We'll just look into it. So I'll just want to confirm my notion that I have derived from this entire calculator, जो भी था percentile का. But for that, I still want some more numbers. Acha. So I was putting in 249 I have put in with 39 rank. ठीक है. Okay. Let me do it in order. That would be much better. और अगर जिनके 221 है 211 है, इफ यू कुड आल्सो जस्ट शेयर योर रैंक. आई नो कि आप लोगों के पास शायद वो फॉर्मूला नहीं है, टू चेक दैट. यस, 162 में एचसीयू इज पॉसिबल. Yes, Juggernaut. I'm actually looking for some more examples. Then I'll tell you कि the situation is no more the same जो हम पहले expect कर रहे थे. ठीक है. So overall, there was some sort of illusion अभी तक. अगर if you look at the scenario अभी के लिए,
but I want certain more couple of more examples, and then I will highlight what exactly is going on or why there is so-called inflation in terms of marking. ठीक है? So कोई और अपने मार्क्स स्कोर परसेंटाइल शेयर करो अगर आपने यहाँ पे किया है. हाँ यार, I am still wondering what was the formula we used in the afternoon. It was 100 minus percentile divide by number of applicants into 100, and the number of applicants are 183 something. I'll have to check myself once again. Uh, okay, 221 पे Shan says 98.95, cool, 192. Thanks, Shan. यार if you guys have found ना rank, तो please एक बारी formula share कर दो chat में, please, humble request, so that बाकी students भी एक बारी देख लें. ठीक है? Okay. Anyone else, if they would like to share, because I'm not putting the names, don't worry. I'll just put in the score, rank, and percentile. So if you could just share. There was one more. Let me see one more example I had. Okay, one second. The other one was. Okay, one second. Okay, 99.69. Hmm. 89.69 at. Okay, I guess I don't have the rank at least अभी के लिए. Cool. ठीक है. I'll just wait for some more. Oh, thank you, Shan. Thank you so much. So everyone who haven't checked their ranks ना, तो आप एक बारी इस फॉर्मूला के थ्रू चेक कर सकते हो. Yeah. Okay. Okay. So the next number. Thank you so much, Shan. Okay. Thank you, Shashwat. Thank you so much for sharing the formula here. Okay. So the next number we'll take is, these are the marks, and the marks 95. I'll just take a couple of more and then I'll just straight away confirm exactly what I'm looking at exactly. Okay. And then you have, so you have 192, 613, 96, 96.63. Cool. Hmm. There is some sort of increasing order. Cool. Looks fine. Thank you, Swani. Yours is 230. Oh, yours is 235. 235. Rank is 94 and the percentile is 99.9. Cool. Fair enough. Santika says 227. So we'll put it over here. 227, 19.9. इससे actually I guess even the entire जो process है ना, that will also be kind of rechecked कि exactly हम वहां जाके details भर रहे, सब चीज कर रहे, is that random or not? Because as far as I see, everything is aligning very well. ठीक है, in terms of ranking, in terms of percentile. So as far as I'm concerned, अभी मेरे को कोई issue नहीं दिख रहा है. ठीक है. Devraj says 128. 85. ठीक है. I'm good with this much to share my views. ठीक है. Yes, Rishabh, all three are possible with 234 EWS. ठीक है. Okay. So the notion that I wanted to share with you, ठीक है, पहला assumption, ठीक है, is
कि it is completely as per the data which the service provider or LPO is used. ठीक है, सारा data जो है which is as per data that they have, उसी के basis पे we are doing this analysis. ठीक है. Now the point is कि what we have come out with all the information is कि जो majority of students है ना, the majority of students are in the range of 200 to 220 के आसपास. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 200 से लेके, चाहे वो 200 हो, 201 हो, 202 हो, वहां से लेके 220 तक there are chunk of students, there's majority of students. ठीक है, so majority of the portion is there in the range of 215 to 20 के पास. And the moment you cross 225, especially अगर आप देखो post 235, how many students you have as per the ranking, अगर हम जाएं, you have around roughly 100 students only. ठीक है, वहीं जो हम initially बात कर रहे थे, the cutoff can be around 240 to 45, but 240 to 45 में अगर the number of students ही मैं fulfill नहीं कर पाऊंगा, then why will I release that cutoff? In Delhi University, you have 200 plus seats. Okay? I am not talking about category 1, category 2 divided equally. I am talking about in general. 200 plus seats हैं. ठीक है? But अगर मैं उस हिसाब से देखूं, तो even at 221, I am not able to fulfill all my 200 seats. Does that make sense? ठीक है. And one more thing कि these course and everything, I'm assuming कि it is based on whosoever have shared their information वहां पे. ठीक है. So I'm assuming कि बहुत से बच्चों ने अभी नहीं फिल किया होगा. That can also be the scenario. उसके basis पे शायद कट ऑफ वेरी करे. बट अभी एज वी स्पीक, बिकॉज देर आर 18,000 स्टूडेंट्स. ठीक है, 18,000 प्लस स्टूडेंट्स. आई डोंट थिंक सो कि सबने जाके यहाँ पे अभी तक चेक कर लिया होगा. दे वुड हैव चेक देयर रैंक एंड एवरीथिंग. ठीक है, until and unless the institution has the final ranking with themselves, अगर वो सीन है तो straight away cut off can go around 220. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना. अगर उनके पास फाइनल रैंकिंग है तो जिस बच्चे ने अगर नहीं भी डिटेल्स शेयर की, स्टिल फॉर द वंस हु हैव शेयर्ड देयर डिटेल्स, उनकी एग्जैक्ट रैंक उन्होंने दिखा दी है अगर उनके पास एक्चुअल नंबर्स हैं. ठीक है, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी अदर इंफॉर्मेशन, बट दे आर रिलाइंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम यूजीसी एनटीए. वो डेटा, नेम, नंबर, मार्क्स, एवरीथिंग सब उनके पास है. when you punch in the application number, it goes to the system. Lookup, ना, excel में lookup होता है. They search with the application number, they look at the marks and ranking based upon that. ठीक है, so this is the metrics they would have used अगर they are using original authenticated data जो एनटीए ने उनसे शेयर किया है, because they are the participating university. ठीक है, दैट कैन बी द केस. और अगर वो है, तभी आपका जो डेटा है, जो रैंक है, वो रिफ्रेश नहीं हो रही है, इट रिमेन्स द सेम. बहुत सारे बच्चों ने कंफर्म किया है कि द रैंक विच वाज देयर इन द मॉर्निंग, that was still there in the evening, which means that can be your final ranking as well. ठीक है, again I would say it's kind of a assumption depending upon क्या criterias उन्होंने लिए हैं. ठीक है, अब 220 is that number which everyone, or of course majority of you, will be happy with अगर डी स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अगर 220 225 के पास जाता है. बिकॉज इन बिटवीन वी वर ऑफ द व्यू की 235 240 के पास भी क्रॉस कर सकता है, बट 230 के आगे they don't have many students, they have just around 9500 students. ठीक है, so until and unless you don't want to fulfill all the seats, this will be the first cutoff. I'm only talking about the first cutoff. उसके बाद का जो सिनेरियो होता है, that depends upon
students shifting from one university or one college to another and the seats getting vacant, उसके basis पे होता है. I'm talking about the first cutoff. So DSC के केस में अगर if this information is authenticated, valid, proper, then you can look at around या 220 220 के आसपास यू कैन हैव इट. ठीक है, क्योंकि अगर आप याद करो जब हमने दोपहर का सेशन लिया था, द नंबर वाज इंक्रीजिंग बाय जस्ट वन. 200 से 201 हुआ था. ठीक है, 200 से 201 हुआ था, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, द रैंक इंक्रीज बाय 50. ठीक है, सो द चंक और द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रेंज ऑफ 200 टू 220 के बीच में है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर हम इस पूरे डेटा पे जाएं, आई हैवंट कंपाइल्ड मोर नंबर्स, आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी वेरी माइन्यूट सैंपल सेट जो आप लोगों ने शेयर किया है. और अगर मैं इनके इस सिस्टम से जाऊं, बेस्ड ऑन द मार्किंग, बेस्ड ऑन द परसेंटाइल, एवरीथिंग लुक्स स्मूथ एंड क्लियर टू मी एटलीस्ट. नहीं यार, दैट विल मेक थिंग्स अ बिट क्लमजी अगर मैं कैटेगरी वन कैटेगरी टू में जाऊंगा, बिकॉज इवन दीज नंबर्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ थर्ड पार्टी रिजल्ट. ठीक है, बट समहाउ आई हैव अ फीलिंग कि शायद ये सही है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगर ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी नहीं होते, देन आई वोंट हैव रिलाइड ऑन द डिटेल्स. बट क्योंकि ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, the results are there with them, so I feel कि हाँ, to a certain extent it's possible. ठीक है, they what they have to do, they have to simply आपका एप्लीकेशन नंबर जो कि यूनिक आईडी होता है, अपने सिस्टम के एप्लीकेशन नंबर और मार्क्स से जस्ट लुकअप करना है, एंड दे हैव टू जस्ट प्रेजेंट यू द रिजल्ट्स. ठीक है, सो समहाउ आई हैव अ फीलिंग कि हाँ ये ठीक है. तो अगेन आप में से कोई, आई डोंट नो, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं. Yeah, there are 200 plus seats. I'm forgetting the number. Is it 105 या 109 category one, category two? So 200 plus seats होती हैं आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में for masters in economics. ठीक है, अगेन दैट इज डिवाइडेड बिटवीन ड्यू नॉन ड्यू, वो आगे की चर्चा के लिए हम रख लेंगे, दैट्स ओके. बट अभी काफी बच्चे, अगर ये एनालिसिस ठीक है, of course the organization जिन्होंने डेटा शेयर किया है, then you can look up to 220 का range. ठीक है, because again chunk of the students are in the zone of 195 to 220, उसके रेंज में है सारे के सारे बच्चे. तो जो मैं आपको बोल रहा था ना, दैट देयर इज अ फाइट एट एवरी नंबर, तो वो जो फाइट है वो मेजोरिटी इस स्लॉट में हो रही है, इस पूरे स्लॉट में हो रही है, बिटवीन 200 टू 220 के आसपास. और ये जो एग्जाम्पल है 200 से 201, जहां पे 50 रैंक का डिफरेंस आ गया, that completely says, that completely highlights कि so many students are sitting over there. ठीक है, अगर आप में से कोई और है, इफ दे कैन शेयर देयर मार्क्स फिर से, आई नो कपल ऑफ यू शेयर्ड इन द आफ्टरनून, तो आप प्लीज फिर से शेयर कर दो, सो दैट आई कैन ऐड सम मोर नंबर्स. तो वो आपको एक प्रॉपर ऑर्डर देगा यहाँ पे टू काइंड ऑफ क्रॉस चेक. In 20, the batch was around 350 students in DSC. It's possible. Last year, तो in fact, स्टूडेंट्स का ही कहना है कि एंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिशन, इट्स ऑनेस्टली नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन कंप्लीटली. ठीक है, मैं एक बारी ना, मैं आपका इनफैक्ट ब्रोशर खोल देता हूँ, 1 सेकेंड. CUET PG समर्थना, 1 सेकेंड, I'll just open. I'll in fact confirm you right away कि how many seats are there. ठीक है, just give me a second. Okay. The analyst means they don't have seats यहाँ पे. Where they have seats is, here. Okay, one more number, एक बारी मैं वो लिख लूँ, फिर मैं आपको seats बताता हूँ फाइनल एज पर द ऑफिशियल ब्रोशर. ठीक है,
Yes, Rishabh, it might be possible with the 188 EWS, 186, हाँ. अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 second, 186, 96.03, 207, 207, 98. Here I would require uh, the rank as well. That will be even better. 207. Okay. कहाँ गया? 207, 1908. Cool. Okay. Okay. अब एक perfect example है. अब I don't know how they are operating. 1 second. So we have 206 as well. Rank is 372, 97.98. Cool. Okay, just in case I don't miss out on anything now. 1 second. 215, so that we have a even more bigger set to authenticate the things. 268. Cool. Exactly how it's going. Exactly. 215. And then it's 98.57. 98.57. It's going in a proper sequential order. Okay, so we have 204B. Cool. That gives a even broader. Cool. 204. 204 पे हम कहाँ पे हैं? 401. 401, 97.8. ठीक है. I'll just take couple of more ranks and then again I'll just try to re-authenticate the entire thing. 202. यार अगर आप भी अपना बता दोगे ना रैंक, that would be great. Okay. So we have 216 as well. 216. And what's the rank? It's 250. Great. And it's 98.64. ओके 207 में हमारे पास क्या है? रैंक इज 360. कूल. आई एम ओके विद दीज मेनी. ठीक है. अच्छा, जस्ट बिफोर आई हेड एंड स्टार्ट दिस, लेट मी जस्ट कंफर्म यू द नंबर ऑफ सीट्स एक बारी फॉर योर रेफरेंस. ठीक है. लेट मी जस्ट डू दैट. ओके. So that it's convenient for all of you. 1 second. Okay. So here I have it, page number 34. Cool. ठीक है. Thanks, Shan, for that. I'm still, I'll just check it once. ठीक है. It's already done. ठीक है. Okay. So पहले to answer your query, ठीक है, अगर आप यहाँ पे notice करो, this year, I don't see them offering even. So this is the number. So there are not 300 around seats. Overall, there are 200 around seats. ठीक है. Category 1, Category 2, आप चाहो तो इनको add कर सकते हो. 120. So around approximately 250, 300 के आसपास seats आपका जाएगा in total. ये final seats हैं. Whatever the number was in 2023, this is the final number for this year. ठीक है. So इतनी seats दिल्ली यूनिवर्सिटी को fill करनी है irrespective of category 1, category 2. Total these are around 250, 300 के आसपास का seats होगा. ठीक है. मैं category 1, category 2 में I won't go there, right? ठीक है. एक सेकेंड. राइट.
सो दिस इज द नंबर, फाइनल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो। लेट्स कम बैक टू यहाँ पे। ओके, अगेन reiterating द फैक्ट कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट स्कोर 204, ठीक है, एट स्कोर 204 204 पे द रैंक इज अराउंड 401, ठीक है, 401। व्हेन यू इंक्रीज 2 मार्क्स, अगर किसी बच्चे के 206 मार्क्स आए हैं, देन द व्हाट्स द रैंक, इट इज 372। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 28-29 पोजीशन या रैंक्स का डिफरेंस है यहाँ। ठीक है, इवन अगर आप परसेंटाइल में देखोगे इट्स अराउंड हाँ 0.18, 97.8 एंड 97.98। ओके, सो इतने का डिफरेंस आता है जब आप 200 से 215 220 के बीच के रेंज में जब आप नेविगेट करते हो, राइट। बट द मोमेंट बट द मोमेंट यू नेविगेट बिटवीन यहाँ पे, देन व्हाट इज द डिफरेंट। अगेन मैंने 220 तक का आपको रेंज बोला है, 200 से लेके 220 तक के रेंज में you will have majority of the students sitting there. Majority of the students are having scorecard of 200 से लेके 220 के बीच। ठीक है, बट वहीं अगर मैं 220 प्लस के रेंज में जाऊं, 225 230 के पास या फर्दर अप द ऑर्डर जाऊं, देन यू विल फील कि हाँ कितने से स्कोर इंक्रीज हो रहा है एंड प्रोपोर्शनेटली कितने से रैंक आपका चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई गेस अगर आप 227 अगर उसको ले लो, दिस इज अगेन 235 पे यू हैव 94 स्टूडेंट सिटिंग, मतलब 235 इज सम नंबर जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली यू हैव 90 to 100 स्टूडेंट सिटिंग देयर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बट नंबर ऑफ सीट्स वी हैव ऑन ऑफर आर, वन सेकेंड, ओके श्योर, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स वी हैव एट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अराउंड approximately these many, which is approximately 250 300 के आसपास is your number overall, category 1 हो category 2 हो। ठीक है, so this is the number of seats you have। तो अगर एक बेसिक कैलकुलेशन से अगर आप रैंक वाइज भी जाओ, तो दे कैन गो इजीली टू 220 का कट ऑफ फॉर द फर्स्ट कट ऑफ, 220 का कट ऑफ हो सकता है क्वाइट इजीली। ठीक है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस अभी हमने नहीं किया है, बेसिक शेयर स्कोर है। ठीक है, and then you have respective ranks as well। उसके अलावा वी हैवंट डन एनीथिंग एक्स्ट्रा और जो अलग से हाईलाइट होकर आए। वन सेकेंड, ठीक है, दैट विल मेक द ऑर्डर। एनी डाउट या बिकॉज इवन अगर आप ये देखोगे, इवन द परसेंटाइल दैट इज मेकिंग सेंस, दैट इज गोइंग इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब जो भी आपको वो इंफॉर्मेशन या आउटपुट दे रहे हैं दैट इज लॉजिकल, इट्स नॉट रैंडम कि कुछ भी आपको आउटपुट दे दिया, कुछ भी रैंक दे दिया, कुछ भी परसेंटाइल दे दिया। एवरीथिंग इज लॉजिकल, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी वेरी गुड प्रोबेबिलिटी that the marks or the rank, sorry, you are getting, that might be very very close to your actual rank। ठीक है, because the system is not altering your ranks based on someone else putting in their number। ठीक है, मतलब और also the with every passing hour the data is getting updated यहाँ पे, still your rank is the same which was there in the morning or afternoon wherever possible। ठीक है, so the system has fixed your rank based on your marks। So either they have the actual list or something like that। This is something I feel। ठीक है, अगर आपको इसमें से किसी में भी कुछ ऑड लग रहा है कि नहीं ये तो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज ऐसा कुछ, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल आल्सो चेक दैट। ठीक है, सो एक्चुअल में अराउंड 220 प्लस देर आर 200 स्टूडेंट्स अगर हम इसके बेसिस पे जाएं। अच्छा, ठीक है, नाउ दैट डीएससी यू कैन एक्सपेक्ट 225। ठीक है, व्हाट कैन बी द जेएनयू पॉसिबिलिटी? गुड क्वेश्चन। यूजुअली हमेशा होता यह है कि
JNU always try to keep the cutoff DSE के मुकाबले थोड़ा सा लोअर एंड पे. ठीक है, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दे कैन हैव better cutoff or a higher cutoff than that. They can match their cutoff as well. That's completely their take. But what I feel कि अगर if DSE goes at that range 220 के range में, right? Yeah, we will discuss about that whether they have the actual data or not. Okay. So now, so JNU might have the same range, or they might even go a bit lower side पे थोड़ा सा 210 के आसपास can be the same, or they will have the same. That can be the scenario. ठीक है. और but द इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो अगेन वापस से इन्हीं नंबर से आता है, विच इज कि बॉस 200 के पास का जो रेंज है वहां बहुत सारा बच्चा है ऑलरेडी, राइट? सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली these मतलब many students, so many students sitting in that particular bracket of 200 to 220 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स. ठीक है. I hope that this is the number, but of course, this is the first cutoff. This is the first cutoff I'm assuming. And please, it is completely based on the data which you have received, based on the ranks you have received, the percentile you have received from the calculator, the third-party calculator that we have used. Okay. Okay, so I'm just talking about the first cutoff and in general overall क्या रह सकता है, क्या expected है. But the moment any university goes down the order, when I say down the order, meaning 220 के नीचे अगर कोई भी जाती है यूनिवर्सिटी, तो the number of applicants are too much कि वो शायद 180 तक ना जाए. ठीक है. अब इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? तो लेट मी टेल यू दैट फायदा उन सारे बच्चों को होगा जो 230 प्लस है. ठीक है, सारे 230 प्लस बच्चों को इसका फायदा होने वाला है. दैट इज वन थिंग. नुकसान उन बच्चों को हो सकता है who are in the range of 150 160 or below. That can be the scenario. ठीक है. Why so? Solely because of the number of seats available and the number of students sitting on each and every number. ठीक है. Again, I will say कि 200 से लेके अराउंड 220 तक का जो रेंज है दैट इज सुपर फिल्ड. ठीक है, सुपर डुपर फिल्ड. वहां पे काफी सारे बच्चे बैठे हैं एज कंपेयर टू द स्टूडेंट सिटिंग इन द अपर हाफ ऑफ 235 230 प्लस के रेंज. ठीक है. But the number of students sitting even above 235 are not fulfilling the number of seats criteria जो around 250 300 के आसपास जो आपकी seats हैं DSC में. That's why they will have to lower a bit their cutoff, which can be assumed, which can be around 220 के आसपास. ठीक है. So this is our interpretation, again solely completely based on the calculator that all of us have referred to for our respective calculation. अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. ठीक है. Okay. Obito, I guess you will have to try central universities. ठीक है. And अगर if that's the scenario, तो थोड़ा देखना पड़ेगा how things will work out. Again, it depends upon how the initial cutoff goes. Okay, so we'll have to check that. Then, so base university 125 general. Yeah, Devraj, I guess there is a possibility with base that they can have admissions at that cutoff, but you will have to check because it's 128 general. So slightly mushkil hoga if they are taking it right away in only the first list. So if they have subsequent list, then it is possible. TSAs, I think they have the actual data since they have data of all the other exams we gave their percentile to. Okay, great. So yeah, exactly. So that is the assumption that we are working with. The information, the numbers, the data and everything, what they have is of
actual data, is actual data which is being shared by the organizing institution with them solely because they are the participating institution. Okay, so I am assuming and giving my verdict based on that. Okay, 121 best college. Yeah, I mean, I guess again I would suggest and refer to begin with central universities ek bari, then we'll have to look forward, है ना? 121 central universities. Is this the first cutoff? Yes, Dipen, I guess, and I'm assuming कि शायद ये कट ऑफ हो सकती है. ठीक है. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि बच्चों ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, बट वो एक्सेप्शनली परफॉर्म, हम सबको जो टेंशन हो रही थी शुरू शुरू में कि क्या वो स्कोर 245 कट ऑफ होगी, पहली कट ऑफ 245 होगी या कैसा रहेगा. ठीक है. सो अगर उस तरीके से हम देखें तो बच्चों ने स्कोर किया है, लेकिन किस ब्रैकेट में स्कोर किया है, दैट्स द क्वेश्चन. सो द आंसर जो हमारे सामने आता है इस पूरे एनालिसिस के बाद, तो जो बच्चों ने मेजोरिटी स्कोर किया है विच इज 200 प्लस, बट वो 200 प्लस कहां तक जाता है, 220 तक जाता है, जहां पे मेजोरिटी बच्चा बैठा हुआ है. ठीक है. अब एक ट्विस्ट ये हो सकता है विच आई फील कि बॉस मैं कट ऑफ निकाल दूं अराउंड 235 240 की. ठीक है, सॉर्टेड. अब मैंने 235 245 की, 235 240 की मैंने कट ऑफ निकाल दी. ठीक है. बट ऑब्वियस कि अगर मेरे पास बच्चे ही नहीं हैं उतने, तो मेरी तो पहली कट ऑफ में सीट्स फिल नहीं होने वाली, राइट. व्हेन आई हैव 3 times the seats compared to the number of students available in this cutoff, in this range, इस रेंज में तो रफली 100 बच्चा है मेरे पास. नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, अप्रोक्स 300. ओके. ठीक है, आई जस्ट टेक दैट. शान एक सेकेंड में, है ना, विल एनालाइज दैट. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैंने ये कट ऑफ निकाला और जितनी सीट जितने बच्चे थे उनको एडमिशन कर दिया, एंड देन आई विल कम अप 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, विथ लिस्ट 2 और कट ऑफ 2. एंड में घूमते घूमते मुझे तो मेरी 300 सीट्स पूरी करनी है. सो इन दैट केस थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं तो कहीं तक भी जा सकता हूँ, अनटिल अनलेस मेरा जो 300 का कोटा है पूरा, 300 सीट्स का जो मेरा कोटा है मेरी यूनिवर्सिटी का, वो पूरा नहीं होगा. I'll keep on releasing the number of list. ठीक है. सो यू कैन हैव अ सिनेरियो जहां पे इनिशियली वो बोल दें कि भाई पहली कट ऑफ हमारी ये है, आप आके अगर इतना आपका स्कोर है, मतलब ऑफ कोर्स हायर एंड पे, ये 235 240 रेंज नहीं है भाई साहब, प्लीज. 235 240 से स्टार्ट होके जिनके भी अबव होंगे वो सारे बच्चे. ठीक है. तो इफ यू हैव दैट मेनी मार्क्स, आप आओ सीट लो. ठीक है. अब व्हेन आई लुक एट कि अब ये सीट्स तो कंप्लीट हुई नहीं, देन आई कम अप विद अराउंड 2 3 4 5, एंड ऑफ कोर्स एंड में सबसे फेवरेट व्हिच इज द स्पॉट राउंड. ठीक है. यस अमन, विल जस्ट डिस्कस दैट एज वेल एंड बाकी क्वेश्चंस भी, है ना. तो आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट यू एवरी पॉसिबल सिनेरियो, और अगर हम इन नंबर या इन डेटा के बेसिस पे जाएं जो मैंने नहीं बनाए, किसी ने भी नहीं बनाए, या आप लोगों के ही स्कोर हैं, देन इजीली इजीली 220 प्लस वाले बच्चे को भी एडमिशन मिलना चाहिए या मिलेगा. अंदर जाके आई एम नॉट टेलिंग अबाउट की कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, उसमें मैं नहीं जा रहा बिकॉज दैट विल मेक थिंग्स अ बिट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है कि कौन सा बच्चा कहाँ से है, सो आई कांट गिव यू एनी रैंडम इंफॉर्मेशन. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट. ठीक है. तो यू शुड बी सेफ इनफ कि हाँ मेरा आ जाएगा, बिकॉज भाई बच्चे ही नहीं है तो सीट तो खाली होंगी ही ना, दे विल कम अप विद सब्सिक्वेंट सीट्स, राइट. सो दैट्स द पॉइंट, एंड दीज कैन बी द राउंड्स. ठीक है. अब चलो एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं. Probable cutoff for IGDR can be
यार लुक नाउ, अगर मैं यहाँ पे देखूं 200 में भी मुश्किल होगा। दे माइट गो अराउंड 210 शायद, अगर इनके बेसिस पे चले। मैंने वही कहा, किसी का फायदा होगा, किसी का थोड़ा सा नुकसान होगा। बट ईदर वेज, जब तक फाइनल नहीं आ जाए कट ऑफ रिजल्ट, रैंकिंग या कुछ भी, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप ऐसे वो मत होना डिसहार्टेंड की नहीं, अगर 210 पे आएगा तो मेरा क्या होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद 190 180 पे भी आईजीडीआर का कॉल आ जाए, राइट। 194 ईडब्ल्यूएस आई थिंक, बोथ जेएनयू तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है, शायद डीएससी भी पॉसिबल। नहीं, डीएससी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, डीएससी मुश्किल रहेगा, बट जेएनयू माइट बी पॉसिबल। Depend, I guess this should be the final, according to me. 225 plus should be the one for the first cutoff. ठीक है, until unless they have it like this way कि हम दो तीन subsequent list में आएंगे, तो फिर 235 will be the first cutoff. ठीक है। uh, Prayantika, 227, I guess you should be able to make it. I guess you should be able to make it with 227. Yeah. Okay, Shan says percentile and mark. Okay. Okay, percentile and rank. Sorry. Okay, so he has the numbers from the afternoon. Thanks, Shan. Okay, so he says, uh, yeah. So 6-9 पे कितना rank था यार Shan? Did you say 56? Cool. 98.35. 98 point. Oh, he has literally calculated. Thank you so much, yeah. 303. Great. Amazing. 96.03 पे है 729। 96.64 पे है। Thank you so much, Sean, and sorry for keeping you waiting for so long. I was just finishing up with that. Great, great work, Sean. Thank you so much once again. Must appreciate. तो बेसिकली शान ने, जिन लोगों ने अपनी रैंक नहीं निकाल पाए थे बिकॉज दे डिडंट हैव द फॉर्मूला, ही हैज फाउंड आउट द रैंक्स फॉर दोज स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है। So you can easily say कि 235 plus में they have approximately 100 students, right? So I don't see why won't they go below 235. So that is for sure, right? So जो बच्चे nervous थे कि 230 में भी होगा नहीं होगा, I see कि उनका होगा, pretty much possible, practically भी possible. ठीक है। uh, Sahana, Shan has calculated the ranks, और अगर आपको formula चाहिए ना, so formula is above. We have just shared, someone shared the formula. I'll just ping agar if it's possible for me. So the formula is, once again, I'll just type it for everyone's convenience and then we'll continue. Okay? Just give me a second, guys. Mhm. Okay. So the formula is 100 minus percent into 183.79 because he has already divided it. Cool. So this is the formula. Okay, Ujjwal. Ujjwal is here and he says 244.99. 244.99. Hmm. Oh, 242, sorry. I was in a shock कि एकदम से एक लूप होल सा निकला कि नंबर ही मैच नहीं कर रहे. But that's not the case. That's 66 and it's 99.64. Cool. Okay. So that's, thank you, Ujjwal, for that. Okay, I'll just continue with some queries and then we'll see. So please discuss the expected cutoff for OBC and EWL. Okay, Aman. Look at looking at the first cutoff, and this is the general starting point. वहां से अगर आप देखोगे तो this should be the ideal range
यहां तक में बच्चों का हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट द EWS, OBC एंड अदर कैटेगरीज, तो आप यहाँ पे इसमें से डेविएशन ले सकते हो अराउंड 5 to 10 मार्क्स का, ठीक है। मैं थोड़ा सेफर साइड पे ही मार्क्स आपको बोलूंगा, ज्यादा मेजर डेविएशन लेने को नहीं बोलूंगा। 5 to 10 मार्क्स का, या इन सम कैटेगरीज 10 to 15 मार्क्स का भी आप डेविएशन ले सकते हो। तो व्हाट आई वांट इज कि आप इसको एज अ बेस रख के चलो, एंड देन सब्सिक्वेंटली इफ यू विश टू क्रॉस चेक फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो, यू कैन डू दैट इजिली, ठीक है। उस केस के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर फ्रॉम सम ऑफ द पास्ट कट ऑफ की कितना ज्यादा वेरिएशन आता है, सो दैट मेक्स सेंस। The more or less same variation will be here, which is approximately ranging from 5 to 15 in some cases. ठीक है? Okay. What will be the last cutoff? Uh, DU नॉन DU स्टूडेंट में कितने मार्क्स का डिफरेंस होगा? Yeah, look, geopolitics. Even the last year when that was the first year for Delhi University to be under category one category, not under category one category, but under CUET. ठीक है, last year was the first year of Delhi University to be under CUET. So last year's entire process की जो DU से बच्चा गया और DU स्टूडेंट वो किस कट ऑफ पे गया उसका इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। सो वी डोंट हैव एग्जैक्टली लास्ट ईयर क्या सिनेरियो रहा था DU स्टूडेंट्स का, नॉन DU का। सो दैट्स व्हाई आई कांट गिव यू अ वेरी ट्रू पिक्चर अबाउट दैट, ठीक है। लास्ट कट ऑफ आई गेस max to max it can go around 215 220. Look, by 220 250 के आसपास they sorry 250 215 215 210 210 के आसपास should be the last cutoff. अब how they play it, it's up to them कि they come up with subsequent list 1 2 3 4, ठीक है, या फर्स्ट लिस्ट में थोड़ा बीच का मार्जिन रखें एंड देन सब्सिक्वेंटली इन द सेकंड लिस्ट दे रिड्यूस्ड अ बिट accordingly. That's their choice, their strategy, how to go about it. But max to max, I guess 215 के आसपास it should be wrapped up. 15 15 के आसपास, 15-10 के आसपास. We are just going by these numbers here. Yes, 165 general Gokhale HCU possible until and unless they also exaggerate their uh, cutoffs thoda. But I think it's possible with 165. 242 DSE JNU, both possible, Ujjwal. Both of them are possible. Yeah. 178 May Nishta, it will be slightly tough. Honestly speaking, it will be tough, irrespective of whether you are a DU student or not, it will be tough. 219 JNU is of course possible, Tia, and DSC में अगर आप in numbers के basis पे जाते हो, which I have a strong feeling, then DSC might also be possible. ठीक है? In case I have missed any question ना, आप फिर से कर सकते हो. Shan says just 4-5 lines of our program did the trick. Great, great. I want actually, मतलब आप लोगों को should do and add something to your resume, and these are the tools you can add. So great. Okay, Dia says 219 rank 220, 219. Okay, 219 rank. That's quite a number. 219, 220, 98.8. 98.8. Cool. ठीक है. Yeah, Dia, I guess both JNU, JNU of course possible, and most likely DSC should be possible. अगर कुछ भी मिस हुआ है ना तो आप प्लीज नीचे लिख सकते हो. I'll just answer that. ठीक है. Okay, biggest question is help you predictor right.
I don't know how to answer that, but based on the facts, based on the information, they have the scorecards, they have the information, so they can do. ठीक है, so there is a good strong possibility कि हाँ ये जो percentile है rank है that might be true. ठीक है, I am assuming it, I am not authenticating it in any way, but yeah, there is a strong feeling solely because they are the participating university and the data is there with all the participating university. ठीक है, रिजल्ट आपको दिखाने से पहले the data, the result was there with all the participating university, and that's a regular practice. There is nothing wrong about that. ठीक है, because कुछ बच्चे होंगे जो शायद सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 20 यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद एलपीयू भी चूज किया हो, किसी ने नहीं किया होगा. एनी हाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर विथ ऑल द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज. So that's why, that's the reason or the notion behind why this can be a true number. Okay, we will have a discussion if whenever the cutoff comes up and if there is any sort of ranking you guys have, so we will have. Okay. Sorry, I just missed your query. 203 JNU OBC. AS is asking 203 JNU. Yes, JNU is possible with 203 OBC. गोखले कट ऑफ कब रिलीज करेगा? हाँ, एग्जैक्टली विजय, दे सेड इट शुड बी रिलीज अराउंड 30th, बट हुआ ये कि जो रजिस्ट्रेशन डेट थी गोखले की, which if I'm not wrong was 24th, it got extended. ठीक है, अब उन्होंने लिखा extended but there was no particular date, right? So because of that, the cutoff releasing date has might have been extended, so you can expect maybe by this week Friday Thursday तक आ जाना चाहिए. ठीक है. हाय सूरज प्रताप. हाय यार, आपने पूछा था कि सर कैन यू प्लीज कंफर्म द टाइमिंग. सॉरी आई couldn't because बीच में मैम का भी एक सेशन था, so I had to keep give some time and then accordingly join, so I couldn't confirm you the time उस time पे. And I did promise 4 o'clock, but because I wanted to have a session something like this, that's why I thought ki let's have a discussion later half in the evening wherein all of you are comfortable and you all of you can join as well. So that's why Suraj, I had to start a bit late. Okay. So coming to your query, 200 EWS, 465 franc non-due. Is there a chance of JNU IGDR? I think Suraj, JNU might be possible. Okay. And same for IGDR. Okay. Both of them are slightly possible. मतलब both of them are possible. DSC का थोड़ा tough रहेगा, right? Because आप ये भी देखो, whatever the number of students are sitting over here, ठीक है, let's suppose, let's take this number itself, 202, 430 बच्चे, if that's the number, ठीक है, which means कि इन 400 बच्चों में they have to take, those students will take admission at D school as well, मतलब either D school or JNU, right? So they will be divided, so there will be seats, correct? 250-300 सीट्स तो आपकी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, again not talking about category 1 category 2, and then you have a good number of seats at JNU as well, again दो courses हैं वहां पे, ठीक है, so there are good amount of seats and accordingly there is a chance कि आपको चांस मिल जाएगा JNU IGDR में. Jagannath says the first cutoff of 235 means the ones with 235 marks will be admitted. Yeah, ideally that what the meaning is. Okay. So again, I'm telling based on their practice, they can do it this way. कि हम यहाँ पे we go in a sequential manner, 1 2 3 4 list और फिर उसके बाद spot round, or they can have a first list थोड़ा सा decent number and then just wrap it up in 2 3 lists. So that's their strategy. ठीक है, या तो बेसिकली इट मींस 235 या 225 जो भी वो नंबर लेकर आते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. या HCU प्रोबेबल कट ऑफ आई थिंक अराउंड 270 280 के आसपास शुड बी द नंबर. ठीक है, ओके, वन सेकेंड, कूल.
Okay. DSC has 49 seats for non-DU. General isn't the chance of getting admission very less. ठीक है. Look, some my rank is 190. I'll just Shrijit, formula is already shared. We have pinned it as well. आप थोड़ा सा scroll करोगे, you'll be able to find it. ठीक है? Shan is 149 seats for non-DU general isn't there? Yeah, look, Shan, that happens. That happens with almost all universities. ठीक है? लेकिन I'll just answer this final question और फिर हम एक कल के सेशन में अटेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे. आप यहाँ पे बात कर रहे हो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की who's offering ओवरऑल 250 से 300 सीट्स. ठीक है. वहीं आप कुछ यूनिवर्सिटीज को देखो, दे ऑफर यू अराउंड 40 30 40 60 सीट्स ओवरऑल, राइट. अब आप वहां पे आप अपना स्कोप देखो, चांस देखो इन योर जनरल कैटेगरी वर्सेस ओवर हियर डीयू, जहां पे आपको एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ फॉर जनरल कैटेगरी यू हैव अराउंड 49 to 50 सीट्स अलोन, जितना उनका टोटल होता है. सो आई नो sometimes many students see number of seats of general category non-DU ये सारी filtering point लगा के you don't have much seats, but still DU offers a good number of seat to you, to all the students. That's why please understand 50% of the seats are for DU students, 50% are for non-DU students. ठीक है. And those 50%, the number is huge. It's 100 plus 120 30 seats है आप लोगों के पास. So don't think कि there is something very less in terms of DU, non-DU or any category wise. DU offers comparatively आप किसी से भी compare करोगे, they offer a good amount of number of seats to each and every. ठीक है. Okay. With this, we'll just wrap up today's session. Yes, Sau's result was supposed to come today, but one of the students mentioned कि वो कल आएगा शाम 5 बजे. So do watch out for Sau का result tomorrow. Thank you so much for joining in. Good night. Take care, everyone. Thank you so much for your support in the comment section, and of course, while helping with the scorecard, percentile, and rank and everything. Okay. Thank you so much, guys. Once again, good night. Take care. We'll meet in the another session. Thank you.